one and all present here today. I, Mansi Gohil, Assistant Professor, Parul Institute of Commerce, welcome you all to the webinar series of Faculty of Commerce. Today we have with us Mr. Kuldeep Thakkar, founder of BuzzMob Digital Marketing Agency. He has also founded the Filmy Fox, a platform on Instagram which has more than 100K followers. He has served more than 100 local businesses and brands like MI, OnePlus, MyFM, and Red FM, and many more for graphic design. He also has contributed for the digital marketing for 15 plus Gujarati movies and 20 plus Gujarati music videos. We welcome you, sir. Hello. Thank you very much, Mansi, for such a nice introduction. I hope I'm audible. Yes, perfectly honest. Okay, thank God. Today's subject is social media marketing with reference to Instagram marketing. So we can say it in short that it's about Instagram marketing only. Uh, let's begin. So मेरा काफी अच्छा introduction मानसी ने कर ही दिया है, so I won't be going through it. But yes, let's start with Instagram overview. The Instagram started as a photo sharing app and popular amongst teens and individuals below 25 years of age. It started in 2010 and ये काफी सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ. And over the period of time, Instagram and audience both have evolved, and now there is a huge user base in age group of 25 to 34 years as well. Over 1 billion monthly active users, and hence Instagram is most popular social media platform. सोचिए 1 billion इतने शॉर्ट टाइम में 2010 में स्टार्ट किया था, इस 2021 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स स्टार्टेड इन यूएसए. एंड आज की बात करूँ तो यूएसए के बाहर उनका जो ऑडियंस है वो है 89%. सो डेफिनेटली इट्स अ प्लेस, अ प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, बिजनेस और टू build your personal brand as well. So nobody can avoid Instagram marketing in this current scenario, because you want people who can check out your services, product, and people are always active on Instagram. Let's go towards some statistics. 1 billion monthly active users, as I said, 500 million plus daily active users. Number of photos and videos uploaded every day is 100 million plus. So that's huge, and that says there's a scope of marketing for every business and on Instagram. And average time spent is 28 minutes. है कुछ लोग मेरे जैसे जो 4-5 घंटे भी बिताते हैं, तब जाके ये 28 minutes का एवरेज बनता है. So yes, and number of businesses listed on Insta is 25 million plus. So that's also huge, and we can see that businesses have adopted Instagram seriously, and they are very much active on Instagram for their branding and marketing. So let's go to the next slide, which says, see, 89% of the users are outside USA. USA से हुआ था Instagram, and आज 89% audience जो है वो USA से बाहर की है. 35% of the people of the user are between 25 to 34 years old. And male-female ratio भी देखे तो 57% female and 43% male. So there's a scope for advertisers कि वो मेल फीमेल दोनों को टारगेट कर सके. ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन में है एक्टिव इंस्टाग्राम पे. 30% ऑडियंस जो है वो है एज बिटवीन 18 to 24, एंड 135 मिलियन प्लस अकाउंट्स जो है वो किसी न किसी शॉपिंग पोस्ट पे टैप करते हैं. सो विच ऑल्सो प्रूव्स that IG marketing is really important, because everybody is just typing on their post, on business posts, on shopping posts. So it's very important platform nowadays. Let's talk about Instagram for business. 2 million plus monthly advertisers. आपने एड्स देखे होंगे, कुछ ना कुछ आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपके फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, तब आपने इंस्टाग्राम खोला, डीएम खोला, फीड आपने किया, कुछ ना कुछ एड्स आते होंगे आपको. सो यस, एवरीबॉडी इज एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम. 500K प्लस एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स आज हर जगह आपको देखने को मिलेंगे. तो पारुल यूनिवर्सिटी में से भी 20-25 इन्फ्लुएंसर्स निकलेंगे अच्छे, जो 10K प्लस फॉलोअर्स वाले होंगे, हो कुछ बड़े भी होंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम मार्केटिंग,
we cannot neglect influencer marketing. Influencer marketing is really a core integral part of Instagram marketing. तो जब भी ब्रांड सोचता है कि इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करता है, then there is a space, there is a dedicated budget for influencer marketing because there's a lot of influencers जो इंस्टाग्राम के लिए उनके ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हैं, वैसा हम कह सकते हैं, because they help us promote our product and services. Also, 60% people say that they discover new product on Instagram. यानी इंस्टाग्राम पे ही उनको कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पता चलता है. So we can understand कि लोग कितना टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड कर रहे हैं. ऑल्सो एट द सेम टाइम हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेसेस जो इंस्टाग्राम को डे बाय डे काफी सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं अपने मार्केटिंग बजट में. एंड 200 मिलियन प्लस पीपल विजिट एटलीस्ट वन बिजनेस प्रोफाइल डेली, दैट इज 20 CR. 20 करोड़ लोग हैं जो एटलीस्ट एक बिजनेस प्रोफाइल डेली विजिट करते हैं. तो yes, for any business, that's a huge thing, and that's also the opportunity for Instagram marketing. Let's go to the next slide, where we talk about account setup and features. So यहाँ पे मैं आपको कुछ basic चीजें बताने वाला हूँ. That how to set up the right Insta profile. That you need to have a good profile image which communicates your business brand or individuality. So in longer run, people will be able to recognize your brand with that display picture profile image. So that's very important. Profile description, जिसे हम कहते हैं bio. तो वो भी आप क्या exactly product service में involved हो, क्या business में involved हो, या फिर personal brand भी बनाना है, तो जो रहता है cake murder on फलाना फलाना date, that doesn't work, right? When you are very serious about Instagram marketing and maybe personal branding on Instagram, या फिर आपको influencer बनना है, then you need to convey it properly that what value you're gonna deliver through your account, why a person should follow your account. That should be very clear in description. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, द फिल्मी फॉक्स मेरा अकाउंट है. They have written most entertaining page for Gujarati films and entertainment updates. So that is very clear कि आपको ये पेज फॉलो करना है तो क्यों करना है. Also, I have written a Gujarati text to convert visitors into followers. That says आता जता जरा नजर तो मारता जाजो, बीजू तो कहीं नहीं परंतु follow करता जाजो. So that's a short appeal to follow my account. Also, Instagram provides only one space to integrate a link, that is Instagram bio. वहाँ पे आप website link डाल सकते हैं. बाकी yes, there is a space on swipe up story as well. बट आप पोस्ट में क्लिकेबल लिंक नहीं डाल सकते, आपको पता ही होगा. सो you need to show your sincerity that okay, somebody visits your profile, then there's something more that person can know about your business brand or personal individuality by clicking on that link. Or maybe you're promoting something with that link in bio, then also it helps. Also, there is a section on Instagram profile which is story highlights. तो किसी बंदे को आपकी प्रोफाइल पूरा स्क्रॉल नहीं करना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है ये बंदा कैसा कंटेंट अपलोड कर रहा है, क्या कर रहा है. देन यू कैन क्रिएट द स्टोरी हाइलाइट्स. जब भी कोई नया यूजर विजिट करता है, दैट पर्सन कैन गो थ्रू स्टोरी हाइलाइट्स एंड गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव डन and what kind of things you are doing. So that will be really useful features for anybody who is into personal brand building or anybody who is promoting their business services or anything. Also, you need to be very careful about your privacy setting because Instagram provides multiple options, that is private account, public account, or business account. That somebody, if it's somebody who is not looking for going public, then one should maintain privacy. जैसे काफी लड़कियों के अकाउंट प्राइवेट ही रहते हैं जिन्हें कुछ वहाँ पे करियर नहीं बनाना है, दे जस्ट वांट टू बी कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली और इंस्टाग्राम. उनको डीएम पे बातचीत करनी है, कुछ मीम शेयर करने हैं, गप्पे शप्पे मारने हैं, तो वो लोग जो है वो प्राइवेट प्रोफाइल रखेंगे. पब्लिक प्रोफाइल रखना जरूरी है, बिजनेस प्रोफाइल रखना जरूरी है. जो ग्रोथ चाहते हैं, जो सभी को अपने फॉलोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स, उनके लिए जरूरी है पब्लिक और बिजनेस अकाउंट रखना. बिजनेस अकाउंट से ये पता चलता है दैट यू गेट डिटेल्ड इनसाइट्स अबाउट योर फॉलोअर्स. वो कौन से टाइम पे एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे,
क्या है आपके मेल फीमेल रेशियो आपके फॉलोअर्स के, काफी सारी डिटेल इंसाइट्स मिलती है। एवरी वीक आपने कितने फॉलोअर्स गेन किए या लूज किए, कौन से दिन पे कितने फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं नहीं रहते, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है, क्रिएटर्स अकाउंट है, देन यू कैन गेट टू नो अबाउट इट। So that is a short part of basic Instagram profile setup. So let's come to types of Instagram posts. So there are 5 types of posts I have mentioned here, and the sixth one is the new one. I'll talk about it soon. So first one is feed, where you can share a static image or a video up to 1 minute, right? Stories disappears in 24 hours. Everybody knows. And if you have that 10,000 above followers, then you can integrate swipe up link as well. Instagram Live, which is very popular. Instagram Live पे ही मतलब लोगों ने अपने लॉकडाउन निकाले हैं पिछले 1.5 साल से। सारे अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को एवरीडे लाइव देखा है और फिर इतना पक भी गया है। So that is Instagram Live. Everybody knows about it. And IGTV is used for somebody who wants to explain things in detail, because it's a longer version of video on Instagram. It's not about just 1 minute or anything kind of reels, which provides you limit up to 30 seconds. जो recently 1 minute हो गया है कुछ दिन पहले। So IGTV is about if a business wants to explain their product services in detail, or a blogger wants to share things in very detail, then IGTV is a good option, because वहाँ पे टाइम काफी ज्यादा देना पड़ेगा। कोई भी व्यूअर है उसके पास एटलीस्ट 5, 10, 15 मिनट है, तभी वो IGTV वीडियो प्ले करेगा। अदरवाइज क्या होगा, सेंटर में बटन दिया इंस्टाग्राम ने, रील्स पे दबाया, स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 15 सेकंड 30 सेकंड के वीडियो देखे, एंटरटेनमेंट मिला या फिर इंफोटेनमेंट मिला, क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है अच्छी। तो रील्स पे भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। इफ बीइंग एन इंडिविजुअल ब्लॉगर, यू कैन आल्सो प्रमोट योरसेल्फ बाय व्हाट वैल्यू यू आर डिलीवरिंग। Maybe you are a singer, then you can post some singing videos. You can do remixes. So that's the sixth type of post on Instagram, because Instagram has recently launched that remix option as well. You can remix reels people have shared and your own reels as well. So that's a new feature. And when I talk about Instagram, Instagram always promotes a content based on few things. अगर आप उनके कुछ भी नए फीचर यूज कर रहे हो, then definitely you are gonna get a huge reach compared to you posted some similar kind of stuff. So it's recommended that you use all this kind of post on your monthly basis, because Instagram promotes those businesses, those individuals who use multiple features, and especially new features like reels and remixes. So एक टाइम था जब रील्स को काफी प्रमोट किया। एनीबडी who has just 500 or 1000 फॉलोअर्स, वो अभी 1 साल में 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स पे आ गए, जस्ट बेस्ड ऑन रील्स। तो रील्स को काफी सपोर्ट किया इंस्टाग्राम ने, बिकॉज दे वांटेड टू फाइट विद टिकटॉक। के टिकटॉक जल्दी इंडिया में वापस आए, उससे पहले रील्स की सबको आदत लगानी है, तो वो सक्सेसफुल इंस्टाग्राम ने कर दिया। रील्स को काफी अच्छी रीच दी, एंड हेंस पीपल स्टार्टेड मेकिंग रील्स। And also Instagram shows their priority that they want to promote reels, and hence they provided reels button in center. So that's the priority they have kept in their mind. Also, if you want your content to go viral, currently reels and remixes are working really well. You can work on that part, because it provides organically good reach. Paid marketing के बारे में हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। Let's go to next slide. Why Instagram marketing? मैंने जैसे आगे बताया, फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड क्या है? एक इंडिविजुअल का भी पर्सनल ब्रांड बन सकता है, एक ब्रांड का भी पर्सनल ब्रांड बन सकता है। इंडिविजुअल का है, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ फूड ब्लॉगर, अ फैशन ब्लॉगर who have specialty in particular thing, like if you are a food blogger and you are covering only street food, then people will visit you to get to know about street food, and you will be very genuine with your content, with your review and everything. Then that builds a credibility, and it helps you grow your followers as well. And once you grow a little bit or number of followers,
इट हेल्प्स यू बिल्ड कनेक्शंस एज वेल, बिकॉज आपके धीरे धीरे 5,000 फॉलोअर्स हो गए, आप किसी 5,000 फॉलोअर्स वाले के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो एंड दोनों साथ में ग्रो कर सकते हो. So these are some organic tactics which can help you grow on Instagram. Second point is getting followers, customers. So brands का क्या है, उन्हें तो कस्टमर चाहिए. But when it comes to social media, it's not about sale, sale and sale. It's never about selling. You need to provide a content जो engage करे. अब आप हर बार कोई बाइक का ब्रांड है जो बोलेगा कभी मेरा बाइक जो 1 लाख वाला था, अगर आप ये महीने में आओगे सिर्फ 90,000 में मिलेगा, वैसे ही बैक टू बैक पोस्ट करेगा, देन पीपल माइट अनफॉलो दैट पेज. बट अगर वो एजुकेशनल फोटो डालता है कि भाई बाइक का ये फीचर है दैट हेल्प्स यू अचीव दिस थिंग, या फिर आपको अभी एक ऑप्शन दे दिया, चलो भाई मानसून है, वीकेंड गेट अवे के लिए आप कहाँ पे जा सकते हो बीइंग इन गुजरात, तो वैसे कुछ इंफॉर्मेटिव एंगेजमेंट बड़े वैसे वाले पोस्ट करेंगे, then it will help them increase followers as well, and in return that followers can be their customers, because social media is all about social. It's not about a traditional advertisement, a traditional kind of a marketing that आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया बड़ा सा, बाइक की फोटो रख दी, या कोई भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, आपने फोटो रख दी, बताया कि ये सैटरडे संडे सेल चल रहा है, आ जाओ ले लो. That won't work on social media. That is just a one part on social media. So social media is all about being social. You need to create a brand loyalty. अब वो लॉयल्टी कब आएगी, जब आप धीरे धीरे उसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. अगर आज मैं बात करूँ एप्पल वालों की, तो एप्पल एंड्रॉइड वालों के फाइट भी होता है कि तेरे फोन में ये नहीं है वो नहीं है, बट जब वो लॉयल्टी आ जाती है, ब्रांड एडवोकेसी आ जाता है, तो एप्पल वाले अपना कभी गिरने नहीं देते, क्योंकि वो कनेक्शन है जो सालों से बना है. So ultimate aim for any brand is to create a loyal followers, a loyal customer. So that's their ultimate aim through social media. अगर वो कर लिया तो बस बात खत्म. वो बंदे खुद ही आपका मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. एप्पल कुछ नया लॉन्च करता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्या किया, पूरी दुनिया कवर करती है. सब लोग जो एप्पल यूजर्स है वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भी ये हुआ, मैंने लाइव इवेंट देखा. So that's how it works. Ultimate aim for any brand, any business is to create a loyal follower, which can help them कि वो follower convert होके अपने customers भी बने. So that's the ultimate aim. साथ में मैंने बताया third is updates and building reputation. तो कुछ आप अपने नए नए प्रोडक्ट्स के अपडेट्स भी दे सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि आपको कभी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात ही नहीं करनी है, डेफिनेटली करनी है, बट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे देन इट वॉन्ट वर्क ऑन सोशल मीडिया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटजी. तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में जब सोचते हैं तो उससे पहले आपके दिमाग में एक गोल क्लियर होना चाहिए, व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर कैंपेन और योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी. आप क्या अचीव करना चाहते हो. तो सबसे पहले आपने वो एक डिसाइड कर लिया कि आपको सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करना है दैट यू एग्जिस्ट. फॉर एग्जांपल एक लोकल रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है आपके वडोदरा में, अलकापुरी में, ठीक है. अब उसे बताना है कि वो भाई वो वहाँ पे उसका नया रेस्टोरेंट खुला है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है बस अवेयरनेस और रीच क्रिएट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले. then that person will target audience accordingly. वो ऐसा पूरा बड़ौदा टारगेट करे या ना करे, आई डोंट नो अबाउट ज्योग्राफी ऑफ बड़ौदा मच कि वो कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ से लोग कौन सी कितनी दूर की रेस्टोरेंट पे जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू अहमदाबाद वी टारगेट अ लिमिटेड रेडियस. जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है वहां पे अगर आपने वो लोकेशन फिक्स करके जियो लोकेशन टारगेटिंग कर दिया तो वहां से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के एरिया में मैक्सिमम वी विल क्रिएट अ कैंपेन की वहां पे मैक्सिमम बuzz क्रिएट हो, वहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि भाई ये एक रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है और क्या उसकी कुछ यूएसपी है. तो वैसा एक कम्युनिकेशन डिजाइन किया और जो उसका रेस्टोरेंट है वहां से डेडिकेटेड 5 या 7 किलोमीटर के रेडियस में ही हम प्रमोट कर रहे हैं. So once you have clear goal in mind, then and then you can go ahead with the campaign planning and marketing plan for Instagram. For example, कोई अलग एक बिजनेस ले लेते हैं कि आपके अलकापुरी में कोई जिम है, उसे एक कैंपेन क्रिएट करना है एंड दैट पर्सन वांट्स टू नो
मे भी कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरे ईयरली ऑफर। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड की वजह से उसने लॉन्च किया कि भी 8,000 में एक साल, बिकॉज कोविड के रीजन से काफी जिम बंद हुए हैं और काफी जिम स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट पर्सन वांट्स टू सर्वाइव। तो मे बी 11-12 हजार उसका एक रेगुलर रेट रहता है, एंड दैट पर्सन लॉन्चेस एन ऑफर कि 8,000 में 1 ईयर मेंबरशिप ऑन जिम। तो वो बंदा जब ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसे नए नए लीड्स चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, देन देयर टू ऑप्शंस ऑन इंस्टाग्राम कि आप लीड जनरेशन कैंपेन भी डिजाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका क्रिएटिव उसके इंस्टाग्राम फीड पे स्टोरी पे कहीं भी दिखेगा। तो वो बंदा वहां पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है टू एडवर्टाइजर, कि उसका नाम, नंबर, वो कौन से एरिया में रहता है। अगर एडवर्टाइजर ने पूछा है क्वेश्चन में, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, एंड देन दैट जिम ओनर, जिम की टीम से बंदा कॉल करेगा और बताएगा कि भाई आपने इंस्टाग्राम पे अपना इंटरेस्ट दिखाया था हमारी ये ऑफर में, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, कब आओगे आप मिलने। तो दैट हाउ इट वर्क्स। आपका गोल क्लियर होना जरूरी है। So once your goal is clear, then and then you can create a target audience, जहाँ पे आप कंट्री हो गए, सिटी, लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हो कि कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको टारगेट करना है। एज ग्रुप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू जिम, यू कैन टारगेट कि भाई चलो भाई 18 से 40 का एज ग्रुप मैंने टारगेट कर लिया कि ज्यादा 40 के ऊपर वाले कम लोग आएंगे, सो लेट्स स्पेंड मोर मनी ऑन 18 to 40। ऐसा नहीं है कि 40 के प्लस वाले नहीं आएंगे। तो वैसे आप एज ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। if it if it's about a cake shop, let's take an example of cake shop। तो केक शॉप वाला क्या टारगेट करेगा? केक शॉप वाले का एक जस्ट एक एग्जांपल ले लेके उसे वैसी सोच है कि उसका 50% बिजनेस जो है दैट इज बर्थडे केक, कि कुछ किसी न किसी की बर्थडे है और वो केक बना रहा है, ऊपर किसी का हैप्पी बर्थडे नाम लिखा है। तो उसे उतना एक नॉलेज, उसके पास डेटा है कि मेरा 50% बिजनेस हैप्पी बर्थडे केक का है। तो वो क्या टारगेट करेगा टारगेट ऑडियंस में? फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त आने वाला है। अगर मैं आज उसके लिए कैंपेन क्रिएट करूंगा, आई कैन चूज कि अगस्त में जिन लोगों की बर्थडे आने वाली है मैं उन्हें टारगेट करना चाहता हूँ। और वहां पे मैंने अपने केक्स दिखाए और साथ में कुछ मैंने कम्युनिकेट किया कि गेट योर बर्थडे केक एट दिस डिस्काउंट और समथिंग, या केक ऑफ द वीक ये है वो है। साथ में जिसकी बर्थडे है उसके फ्रेंड्स को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि बर्थडे जिसकी है वो खुद तो केक खरीदेगा नहीं, शायद ही कोई खरीदे। तो जिसकी बर्थडे है उसके फ्रेंड को भी हम टारगेट कर सकते हैं, सो दैट दे आर द डिसीजन मेकर कि भाई फ्रेंड की बर्थडे आ रही है कि कौन सा केक ले। तो वैसा डिटेल टारगेटिंग ऑप्शंस है थ्रू फेसबुक एड पैनल, जो आपको हेल्प करता है फेसबुक कैंपेन और इंस्टाग्राम कैंपेन दोनों में। साथ में आपको कंपटीटर एनालिसिस करना जरूरी है कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट गुड थिंग्स दे आर डूइंग व्हिच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस, इन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द एंड यू नीड टू कन्वर्ट योर फॉलोवर्स टू कस्टमर। तो उनके साथ आपने एंगेज करने के लिए कॉन्टेस्ट कर दिए, कुछ गिव अवे कर लिए, और आपका कुछ कैंपेन आपने बनाया। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोर्स बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूडेमी है, या पारो यूनिवर्सिटी ही कोई अपना उसका एमबीए स्टार्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए उसने एक लिंक डाला है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट मोर इन्फो विजिट द लिंक, विजिट द वेबसाइट। तो वहां पे लोग विजिट कर रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ 15 डे कैंपेन, फॉर एग्जाम्पल 2,000 लोगों ने वो वेबसाइट विजिट की। सो देयर इज एन ऑप्शन on Instagram that you can target those 2,000 people again and again. That's called retargeting, remarketing. That is also a very important tool through Facebook ads. तो जब भी आप Instagram एड्स रन करते हो तो ये सारी चीजें आती हैं। मैं काफी बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पैनल अगर आप देखें, कोई भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली उन्हें पूरा पैनल खोल के एक्सप्लोर करना चाहिए पहले खुद। आई डोंट सजेस्ट कि आप पहले ही कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो अगर सीखना है तो। जितना खुद सीख सको, जितना यूट्यूब से सीखो, उतना पहले बेहतर है। देन देयर इज एनी डाउट, देन यू गो टू एक्सपर्ट। सो बेसिक टिप्स मैं यहाँ पे कुछ शेयर कर रहा हूँ फॉर इंस्टाग्राम, कि टाइमिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। कि कोई टाइम आपके प्रोफाइल के लिए इतना सही होगा कि वो टाइम पे आप पोस्ट करते हो, देन यू स्टार्ट गेटिंग इमीडिएट अ गुड नंबर ऑफ लाइक्स, कमेंट्स। तो वो टाइम है कि जब आपके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे।
So first of all, you need to understand कि आपके followers कौन से time पे active रहते हैं. If it's a business profile, then you can get to know it from insights. But if it's not a business profile, it's a personal profile, which is public, then also you can experiment and try it again and again, and you can find out what works for you and what doesn't. So that's how it works. Timing is really, really important for posting. Another thing is collaborate. If you are growing as an influencer, a blogger, maybe a food blogger, fashion blogger, or anybody, then you need to start collaborating with people who have similar kind of following on Instagram so that you can gain more followers. ए वाला बंदा है उसको बी वाले फॉलोअर्स भी उसकी रीच मिल जाएगी, बी वाला जो बंदा है उसको ए वाले फॉलोअर्स की भी रीच मिल जाएगी. तो अभी एक नया कोलाबोरेशन का एक नया टूल, अभी नया फीचर निकाला है इंस्टाग्राम में, दैट यू कैन टैग देम एंड दोनों के प्रोफाइल पे शेयर हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो रियली गुड फीचर विच इंस्टाग्राम हैज रिसेंटली लॉन्च इन लास्ट 7-10 days. And you can ask your customer, your followers to mention your account on their Instagram story and post by doing some activity. For example, आप गए रेस्टोरेंट पे वहां पे बंदे ने, अगर वो स्मार्ट है बंदा, नया रेस्टोरेंट खुला है, ही वांट्स टू गेट विजिबिलिटी ऑन इंस्टाग्राम, देन वो वहां पे लिख सकता है कि भाई आप गूगल पे रिव्यू छोड़े, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट हमें टैग करके डाले एंड गेट 10% ऑफ. So that can be also a strategy and by which you can increase your visibility for your business, for your product or services. So those are the tips. And यहाँ पे मैं कुछ open discussion के लिए हूँ कि but I don't know मैं कितने feedback ले पाऊंगा students से जो अभी सुन रहे हैं. So let's discuss influencer marketing. मैंने जैसे बताया, influencer marketing इतना इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बिकॉज 5 लाख से ज्यादा एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स है इंस्टाग्राम पे, जो क्विकली आपकी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको एक जो बंदा जो इन्फ्लुएंसर है उसके लॉयल फैन फॉलोइंग जो भी है वहां तक आपको पहुंचा सकते हैं. तो आपको सही इन्फ्लुएंसर चुनना भी जरूरी है व्हेन इट कम्स टू योर ब्रांड. जैसे पारुल ऑलवेज मेक्स राइट चॉइस. अभी ब्रांड एम्बेसडर है प्रतीक गांधी, मल्हार ठाकर, किंजल दवे. सो सारे इन्फ्लुएंसर्स एक राइट पकड़ना भी जरूरी है. अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है और आपने कोई एक गलत इन्फ्लुएंसर पकड़ लिया, चलो उसकी रीच है बट आपको पता है कि भी जो वो कंटेंट डाल रहा है वो ऑलवेज फूड की बात कर रहा है एंड सडनली यू शेयर योर इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल, जब वो बंदे ने ट्रैवल के बारे में अपने प्रोफाइल में कुछ डाला ही नहीं है, उसके फॉलोअर्स ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए उसको फॉलो ही नहीं करते, बट फिर भी यू स्टार्ट शेयरिंग through that influencer about travel, then that might not help you convert it into business or maybe consideration. So it's very important to choose your influencers wisely when you are going for influencer marketing. फिल्म के मार्केटिंग भी काफी अलग अलग तरीके से होते हैं. सो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो मैंने काफी सारी चीजें बता दी. अब कुछ पेजेस हो रहे हैं, जैसे मेरा ये द फिल्मी फॉक्स है, वैसे जो बॉलीवुड कंटेंट प्रमोट करते हैं, नेटफ्लिक्स हो गए, वैसे कंटेंट प्रमोट करते हैं, वैसे काफी मीम पेज है, तो वो मीम के थ्रू भी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. पॉलिटिकल पार्टी भी अपने प्रमोशन, अपना एजेंडा या आप बता सकते हो प्रोपेगेंडा अलग अलग पेजेस के थ्रू शेयर करते हैं. तो वैसी चीजें है, यू नीड टू चूज अ राइट प्लेटफॉर्म टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन सो दैट आपको एक राइट ऑडियंस मिले जो आपको कंसिडर करे. एंड इफ दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट making a decision on that product or service, then you should be in their mind कि भाई चलो भाई मैंने ये देखा था, ये इन्फ्लुएंसर ने शेयर किया था, लेट मी ट्राई. तो इन्फ्लुएंसर भी वैसा क्रेडिबल होना चाहिए कि वो हर एक चीज को पैसे के लिए प्रमोट कर ले, चाहे अच्छा हो या ना हो, सभी को अच्छा ही बोल दे. वैसा है तो वो लॉन्ग टर्म में शायद वर्क ना करे. सो इन्फ्लुएंसर जो भी है उसे भी खुद काफी जाग के रहना चाहिए कि सर पैसा मिल रहा है इसलिए सारे के सारे डील ले लिए. दैट वोंट वर्क फॉर देम इन अ लॉन्गर रन. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी डिटेल सब्जेक्ट है और उस पर एक अलग से सेशन लिया जा सकता है. सो आई वोंट बी डिस्कसिंग मोर ओवर दिस. कभी पारुल में पर्सनली आऊंगा ऑडिटोरियम में तो मजा आएगा. ये काफी इंटरेस्टिंग है.
ऑडियंस टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग। कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से कोई साइट विजिट की, चाहे मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, वहां पे कोई प्रोडक्ट देखा आपने, and suddenly within few hours you start seeing those ads in your Facebook and Instagram and maybe on other Google network? ऐसा हुआ है? डेफिनेटली हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा कि कुछ भी उन्होंने सर्च किया और सिमिलर चीजें उनको दिखाई देने लगी। तो एक अच्छा फीचर ये है ऑडियंस टारगेटिंग, या मैं बताऊं रीटारगेटिंग का और रीमार्केटिंग का, कि एक बार बंदा अगर आपकी वेबसाइट विजिट कर लेता है, देन यू गेट द डेटा कि भाई इतने लोग हैं जिन्होंने पिछले 7 दिन में आपका वेबसाइट विजिट किया है, इतने लोग हैं जिन्होंने पिछले 30 डेज में वेबसाइट विजिट किया है, और इतने लोग हैं जिसने 90 डेज में वेबसाइट विजिट किया है। नाउ यू कैन क्रिएट अ कैंपेन कि उसने कौन सा कैटेगरी वाला पेज विजिट किया है ऑन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, and based on which they create a campaign and they target you again and again। मतलब इतना हैमरिंग कर लेंगे कि आपको मन हो जाएगा भी ले ही लूं, उसको अवॉइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दैट इज अबाउट ऑडियंस टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग। जस्ट अ सेकंड। ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी लंबा है, बट कभी फेसबुक पैनल खोल के अगर इसके टारगेटिंग रीटारगेटिंग में भी 1 घंटे का सेशन लिया जाए तो डेफिनेटली वो कम ही होगा, इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो पूछे तो मुझे काफी मजा आएगा बातें करने में। एंड यस, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, जितने भी लोग जुड़े हैं, और विद इन नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स किसी को भी कोई क्वेश्चन भी है, मुझे डायरेक्ट डीएम भी करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका आंसर दूंगा। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 24 to 48 hours आई बी available. I'll try to available and answer most of them. You just need to say that okay, I am from Parul, I listen to you on this Parul webinar, and मुझे कुछ एक क्वेरी है, आप सिर्फ मुझे बताइए, डीएम कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। I am expecting some questions from student if there's any. Yes, students, if you have any questions, please go ahead with that. Uh, I hope that I think there are no questions, but if at all any questions are there, I'll tell students to DM you, sir. So they will follow your page also, and they will DM if they have any doubts further. Okay. Thank you so much, sir, for sharing your insights on digital marketing. So I'm sure that our students will be using Instagram not only for reels and feeds, but also for digital marketing. Thank you so much, sir. Thank you, Mansi, for inviting. Sir Aditya, there's one Yes. question. Okay. Go So on. there's one question that what is the role of AI in digital marketing and blockchain technology? What is role of? Uh, like blockchain technology, if you want to use blockchain technology in the digital marketing, how you can do that? That is one See, question. blockchain technology is definitely not my area of interest, and I'm not doing it and going in it. I have got really good opportunities 5 years back to get into it, and I didn't opt for it. And yes, I won't be going through it. जिस मैटर में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस पर मैं कोई आंसर नहीं Achha. Okay. Okay. Thank you so much, sir, for joining with us. Thank you so much. करूँगा। वेलकम।